Welcome to all here in the session of mathematics. In previous episode already we have been discussed the exercise 12A, 12B of the chapter vector algebra of elements book which is belongs to CHSE of Odisha. In today's episode we'll start exercise 12C. गत एपिसोड रे भी आमे एक्सरसाइज 12C रो वेक्टर प्रोडक्ट डेफिनेशन आउ तीनटा प्रॉब्लम आमे कर सारछु दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट केमती बाहर करंती डिटरमिनेंट स्टाइल रे सेटा भी डिस्कस हे चारछि दैट इज बिलोंग्स टू 6th एपिसोड. आज का एपिसोड है 7th एपिसोड. सो आज का एपिसोड रे आमे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सेटा सिखिबा. ओके दैट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन न कले तुमे जानि परिबोनी ए फार्मूलाटा केमती डिराइव हला से फार्मूलाटा डेरिवेशन कोठु हला सेटा जानिया पई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करिवा दरकार. सपोज वन वेक्टर इज हियर, ए वेक्टर इज हियर, दैट इज ए वेक्टर O A vector, and suppose OB with the B vector and angle between them is theta. Okay, ताले OA vector जेती की लेंथ नहीं की सेम लेंथ रो suppose we'll draw one parallelogram that is OA vector is same direction आउ B suppose C BC vector length OA vector length same, so A vector direction same अच्छी माने एटा भी A vector हम सेमती OB vector direction B vector माने suppose AC vector direction same हला ताले B कौन है जीवो B vector है जीवो ताले direction same length same ताले एटा गोटे parallelogram है गला हला. parallelogram रे suppose गोटे perpendicular मु drop करली को पॉइंट रो B पॉइंट रो एटा perpendicular हाँ that is angle theta and this angle is perpendicular that is 90 degree है ना. तो इटा right angle triangle है गला that is BMO is one of the right angle triangle. So first we will mention let OA vector is equal to A vector and OB vector is equal to B vector, then and angle between them that is angle BOA is equal to let theta if BM this one perpendicular to the base that is OA. So BOM got a right angle triangle है गला. In right angle triangle BOM what happen you see sin theta is equal to P by H that is BM by H. H टा किए OB vector of magnitude length माने magnitude that is BM by B vector of magnitude that implies sin theta is equal to this much. So this is nothing but the BM is equal to B vector of magnitude into sin theta equation number 1. Now गत एपिसोड रे पढ़थिलु A vector cross B vector दीटा वेक्टर भितर वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट. हाउ इज इट डिफाइंड that is A vector magnitude B vector magnitude तांको भितर एंगल जब थीटा अछि then sin theta into n cap. What is n cap? N cap is the unit vector perpendicular to the plane containing both the vectors A vector as well as B vector. Okay, would you follow or not? Now this can be written as A vector magnitude here B vector magnitude into sin theta जगह replace कर पारी BM, so BM into n cap that is nothing but the A vector cross B vector. यदि magnitude both side नहीं जीवी ताले A cross B vector magnitude is equal to A vector magnitude BM means what? BM means height of the parallelogram रे इटा हाइट इटा होची बेस OA वेक्टर A वेक्टर होची बेस ताले OA into BM. सो इटा लिख परिबे केते OA that is OA into BM into n cap रो मैग्नीट्यूड केते 1 that is nothing but the OA into BM. so base into height that is base into height. अच्छा base into height टा कोन parallelogram रो एरिया है जो. So that is A cross B, the magnitude is the area of the parallelogram.
स्कूल लेवल पढ़थिबो पैरेललोग्राम रो एरिया होची बेस इनटू हाइट पैरेललोग्राम ओ ए सी बी ओके ताले पैरेललोग्राम रो एरिया केन दला दैट इज इफ टू एडजेसेंट साइड गिवन एडजेसेंट साइड माने बुझी परछो संलग्न भाव दैट इज OA एंड OB ए वेक्टर देथियो बी वेक्टर देथियो तांकर क्रॉस प्रोडक्ट बाहर करिवो तारे मैग्नीट्यूड बाहर करिवो दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OACB अच्छा गोटे ट्रायंगल रे सपोज बाहर करिवो त आमे जानिछु स्कूल लेवल पढ़ के आछो वन पैरेललोग्राम रे गोटे जदी डायगोनल टाणी दउचो ताले कोन हेगला इट डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल एरिया दैट इज ए ट्रायंगल एरिया जहा ए ट्रायंगल एरिया से मिसी की गोटे पैरेललोग्राम रो एरिया ताले पैरेललोग्राम रो एरिया रो हाफ कर देले गोटे ट्रायंगल रो एरिया बाहर जिवो ताले OAB ट्रायंगल एरिया सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB is equal to half of A vector cross B vector magnitude okay so area of the triangle is OAB is a half of A cross B रो magnitude रो half and but parallelogram रो area होची A cross B रो magnitude और A cross B रो magnitude केमती बाहरे अच्छा A cross B केन बाहरे गत एपिसोड रे करथिलु तथापि आउथरे मन पकई दउची A रो सपोज A is equal to A vector is equal to A1 I cap A2 J cap A3 K cap ताले क्रॉस प्रोडक्ट केन बाहरिबो I cap J cap K cap A रो पोजीशन वेक्टर जहाँ अच्छी कंपोनेंट वेक्टर्स A1 A2 A3 B vector suppose B1 B2 B3 that is B1 I cap B2 J cap B3 K cap B1 I cap ith component तले B1 jth component तले B2 K तले kth component that is B3 तारो determinant so A cross B एमती बाहर करियो अब मैग्नीट्यूड बाहर करिया फार्मूला प्रीवियस एपिसोड रे हमें डिस्कशन करि सारछु ओके ताले हमें दीटा फार्मूला बाहर कलु ए दीटा फार्मूला एटा ही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स if you have to ask what is the geometrical interpretation of vector product between the two vectors then your answer should be if two adjacent side of parallelogram A vector and B vector then their cross product is nothing but the area of the parallelogram OACB okay तार मैग्नीट्यूड टा हबो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल हबो से मैग्नीट्यूड रो हाफ ओके सो मेक इट ए नोट नाउ विल गो टू द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12C तो ये भली क्वेश्चन जो बेस करके अच्छी ए फार्मूला ऊपर से गुडी को बहुत शीघ्र करि परिबा हमें ओके सो मेक इट ए नोट फर्स्ट now I'll take number 4 of exercise 12C okay so he is asking find the area of the parallelogram whose adjacent sides are given that is A vector is equal to I cap plus J cap plus 3K cap and B vector is equal to I cap minus J cap these are two adjacent sides first you have to mention given A vector is equal to this much and B vector is equal to this much are two adjacent sides of a parallelogram okay that means first you have to find A vector cross B vector their vector product that is cross product so cross product केम भारी हो जानी सैलनी that is determinant style रे I cap J cap K cap the first A vector component ith component केते 2 so I तले 2 लिखियो jth component केते 1 J तले 1 लिखियो kth component केते 3 next B vector ith component केते 1 jth component minus 1 kth component is not there that means what 0 okay now you can find what is the A cross B that is I cap whole into 1 into 0 0 minus 3 that is 0 plus 3 minus J cap into 0 minus 3 plus K cap into minus 2 minus 1 so this is nothing but the 3 I cap minus plus 3 J cap minus 3 K cap okay so this is the vector product between the two vectors now we have to find the magnitude A vector B vector magnitude केते देखो 3 square plus 3 square plus 3 square root over
3 square, or you can write minus 3 square, same. So 9 plus 9 plus 9, that is 27, root over, that is 9 into 3, 3 root 3, which is the area of the, hence the area of the parallelogram is equal to A cross B the magnitude, which is equal to 3 root 3 square unit. You can write square unit. Okay, so this is the area of the parallelogram if two adjacent sides of the parallelogram given in the form of vector, that is component vector. Okay, would you follow or not? समस्त बुझी पारल प्राय A vector देइथिबो, B vector देइथिबो, तार एरिया पचारथिबो parallelogram रो हला adjacent sides, A vector B vector माने adjacent sides संलग्न भाग ताल देइथिले कोन करियो, determinant स्टाइल A cross B फर्स्ट स्टेप रे बाहर कर दबो, मैग्नीट्यूड के बाहर करियो ith कंपोनेंट स्क्वायर, jth कंपोनेंट स्क्वायर, kth कंपोनेंट स्क्वायर रूट ओवर हला. तो एथिरु 4 मार्क रो क्वेश्चन गोटे आछि. एठी जदी पचारला 4 नंबर पर 5 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, वर्टेक्स ए देइछि, सपोज ABC ट्रायंगल रे A पॉइंट दे देइछि, B पॉइंट दे देइछि, C पॉइंट दे देइछि. ओके, कोन कोन वर्टिसेस देइछि क्वेश्चन टा देखो. नंबर 5, A 1 2 4 3 1 minus 2, 1 2 4 3 1 minus 2 and 4 3 1 4 3 1. Any two vector बाहर कर दो. AB vector, AC vector suppose बाहर कर लो. First you have to find AB vector. Number 5 B1. Given A coordinate आगे लिख दो. Given condition 1 2 4, that is B given 3 1 minus 2 and C is given 4 3 1. Okay, now I will find AB vector. AB vector is B रो position vector minus A रो position vector 3 minus 1 I cap, that is 2 I cap. तुम डायरेक्ट लिखिबोनी, तुम लिखिबो 3 minus 1 into I cap, that is 2 I cap. 1 minus 2, that is minus J cap. Minus 2 minus 4, that is minus 6 K cap. Then find करियो कौन, AC vector और BC vector जहाँ find कल होगा. Suppose AC vector find कलो, AC है 4 minus 1 3 I cap, 3 minus 2 1 J cap, 1 minus 4 minus 3 K cap. बाहरी गला. तापर AB cross AC बाहर कर दो. AB vector cross AC vector. AB cross AC माने कौन, ith component, jth component, kth component. इधर लिख दो 2 minus 1 minus 6. यार सब ith component, jth component, kth component लिख दलो. तार भी लिख दो 3 1 minus 3. यार determinant find कर दबो. determinant find कर सार की AB cross AC रो magnitude बाहर करिवो. AB vector cross XC vector magnitude बाहर करो. magnitude केम बाहर करंती जानि साइलणी, स्क्वायर करी की रूट ओवर बाहर करिवो. एटी बाहरी गला, एटा magnitude बाहरी गला. तापरे एंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, एरिया of the triangle ABC is equal to half नबो, half of AB vector cross AC vector magnitude. जहाँ magnitude बाहरला सेटा बाहर जीव. बुझी पाला. एठी magnitude जहाँ बाहर जीव तारा half multiply कर दो, सेटा area of the triangle. ता माने parallelogram रे area रे half लखिवा दरकार नहीं, खाली cross product तार magnitude. किंतु area of the जदि triangle पचारिवो ताले एठी पिलाने भूल करंती. एटा भी सेमती कर दियंती कि parallelogram रे हाफ मल्टीप्लाई कर दियंती. सेठी किंतु हाफ मल्टीप्लाई करा जीवो नाही. एरिया ऑफ द ट्रायंगल रे हाफ मल्टीप्लाई करी कि जहां क्रॉस प्रोडक्ट बाहर करथिबो, वेक्टर प्रोडक्ट डिटरमिनेंट रे तार मैग्नीट्यूड बाहर करियो. मैग्नीट्यूड केन बाहर करंती जानि साइलणी, रूट ओवर ऑफ दिस ith कंपोनेंट स्क्वायर. एठी जा बाहरथिबो jth कंपोनेंट स्क्वायर, kth कंपोनेंट स्क्वायर रूट ओवर. एठी बाहरला. तापर ता देरा हाफ मल्टीप्लाई कर दबो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC. ओके, सो 4 नंबर 5 नंबर सब करि परिबो. So next number आमे नंबर 7 वर्तमान करिवा. So make it a note first. नंबर 7 क्वेश्चन पढ़ी के करिवा. ओके, now I'll take number 7 of exercise 12C. Very important question for your board examination. You see, you have to prove A cross B, vector product of A and B, square of this A cross B whole square is equal to A square B square minus A dot B whole square. Okay, this one is very important for your board examination. What is given? That is given A cross B. A cross B means vector A magnitude
vector B magnitude. If theta be the angle between A and B, then it is sin theta into n cap. You should mention where theta be the angle between A vector and B vector, n cap be the unit vector perpendicular to the plane A containing A and B. Okay, so now we have to prove A cross B whole square. So taking A cross B whole square is nothing but the whole square of RHS, that is A vector magnitude square, B vector magnitude square. This is nothing but the sin square theta, n cap magnitude square. So A vector magnitude square, B vector magnitude square, sin square theta, n cap to square. A vector magnitude square कहते A square, B vector magnitude square B square, sin square theta can be written as 1 minus cos square theta, n vector magnitude 1 the square. Okay, now we'll multiply A square B square with 1 minus cos square theta, that is A square B square minus A square B square cos square theta. Okay, देखो आस्ते आस्ते पाखापाखि पहुँचलुणु RHS रे. A square B square फास्ट टर्म मिसीगला, नेक्स्ट टर्मटा खाली एटा आनिबा A डॉट B, that is A square B square minus A square means A vector magnitude ro square, B square means B vector magnitude ro square, cos square theta whole square. Okay, this can be written as this one, that is nothing but the A square B square minus A vector magnitude B vector magnitude cos theta whole square. If you write likewise, nothing will be wrong. देखो ये मिसई दियो, A vector magnitude रो स्क्वायर, B vector magnitude रो स्क्वायर, cos theta होल स्क्वायर, सबुडा होल स्क्वायर थिला गोटे लेखि होल स्क्वायर कर देलु. So therefore एटा ही डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स A vector and B vector. So this is nothing but the A square B square minus A dot B. This is nothing but the inside the bracket जोटा अछि A dot B रो होल स्क्वायर, which is RHS. So A vector cross B vector of whole square is nothing but the A square B square minus A dot B whole square. Okay, just we have proved. So likewise you will prove a question ta 4 mark ro question pade. So therefore you can make it a note. Now we'll go to the number 8. Okay, now we read the next question, that is number 8. 8 रे कौन क्वेश्चन देछि A cross B is equal to B cross C given not equal to 0. You have to prove A plus C vector is equal to M into B. Okay, M into B vector. So what are the given condition? Let us start the solution. So given, first you have to mention what are the given condition. Okay, given A cross B vector is equal to B cross C vector which is not equal to 0. That means what? A cross B vector, B cross C can be written as minus of C cross B. Okay, B cross C रो जदि लिखिबा C cross B रे ताले माइनस हे जो चेंज हे गला ऑर्डर टा माइनस में जानि छ क्रॉस प्रोडक्ट रे. ओके, दैट्स व्हाई एटा पर नै आसो लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफर कर दियो. A cross B can be written as plus C cross B is equal to 0. So इथरु देखो B वेक्टर मल्टीप्लाई हेछि क्रॉस प्रोडक्ट, एपटे भी B वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हेछि, ताले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पके देबो. ताले A वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिखिबो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. You should mention here. Okay, एंकर क्रॉस प्रोडक्ट केतेबेले 0 हुए जेतेबेले तांको भीतर एंगल 0 डिग्री होता है. Either they are parallel or they are coincide, isn't it? यदि parallel हे गले भी तांको भीतर एंगल 0 डिग्री. So the angle between them is 0, that is sin theta is 0, theta is equal to 0. नहीं कौन लिखियो the angle between A plus C vector and B vector is 0 degree. That means they are parallel to each other, you can write.
A plus C vector is parallel to B vector. अच्छा दीटा वेक्टर पैरेलल हेले वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. एटा फर्स्ट चैप्टर जानिछ कराई छी बहुत गुडे प्रॉब्लम जे न जानिछ लिंक रे दिया छी फर्स्ट एपिसोड देखि दो. फर्स्ट एपिसोड रे देखि छ तुमे एनी टू वेक्टर्स इफ पैरेलल टू ईच अदर देन वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. ताले एठी गोटे स्केलर मल्टीप्लाई कर दबा m वेक्टर इनटू b वेक्टर. वन वेक्टर माने a plus c वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्केलर. स्केलर हला m इनटू अनदर वेक्टर दैट इज b वेक्टर. वेयर इट मेंशन करियो वेयर m इज ए स्केलर. m इज ए स्केलर. ओके सो प्रूव्ड a plus c is equal to m into b देथिला प्रूव करिया प्रूव हे गला. हेंस प्रूव्ड. So likewise you can prove if a cross b is equal to b cross c not equal 0 you have to prove a plus c is equal to m into b. केमती कलो खाली b cross c को एपटू नहीं आसले भी डायरेक्ट हितांदा बा सेठी चेंज कर दो माइनस c cross b एपटू आसले प्लस हे गला. हमर a plus c दरकार ताले a plus c एटी b वेक्टर टा कॉमन नहीं जीवो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पकई दबो. सेट मेंशन करियो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कारण डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रे a cross b c cross b हितांदा तो एटा को एमती लिख परियो एटा को एमती लिख परियो. सो रिप्लेस कर देले क्रॉस प्रोडक्ट जेकोसी दीटा वेक्टर रो क्रॉस प्रोडक्ट 0 माने तांको भीतर एंगल टा 0 दैट मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सो देयरफॉर इट मेंशन करियो एंगल बिटवीन देम इज 0. सो a plus c वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर. अच्छा दीटा वेक्टर पैरेलल हेले वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. सो देयरफॉर वन वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. सो वेयर m इज ए स्केलर हेंस प्रूव्ड. ओके सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. नेक्स्ट सेशन रे आमे आउ जो रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एक्सरसाइज 12 सी रा रहिला से गुडी को करबा. ओके अंटिल देन गुड बाय. थैंक यू.